Hi friends, this is Mr. Razia. Welcomes you to your own channel Jay Gurdev English Literature. Friends, today I'm here to talk about Elizabethan Age. Before it, we have also covered our 4 videos in the British English History series. Whereas we have covered Anglo-Saxon, Anglo-Norman period, Age of Chaucer, and today we are just going to deal with Elizabethan Age. Elizabethan Age, if we talk about the Elizabethan Age, the Elizabethan period is also known as Shakespearean Age, Age of Shakespeare. We know very well his still a very prominent name of Shakespeare. The people love it. People love to read his all the materials written by him. So today here we are going to talk about Elizabethan Age. First of all, the Elizabethan period is said to be one of the most important period in history of English literature. This is also known as golden period. This is also known as golden period because of prominent writers and their work. सो हेयर व्हाट इज़ देयर, अगर हम बात करें एलिजाबेथन एज की, तो एलिजाबेथन एज पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड मानी जाती है, जिसे हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ दिस एज. इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे विच दोज हु आर स्टिल पॉपुलर. For example, we have the prominent name like Shakespeare, because as well as the golden period is called because of prominent writers and their works, as well as politically and discoveries of the world's other countries also. As I told you the example also, the prominent writer like Shakespeare. Elizabeth supports art actively also. If I see that in the Elizabethan age, not only socio-economically the British was getting a stronger, but also Queen Elizabeth was very active in the arts form also, and that is why the literature also got developed in this age. She is known as Virgin Queen. If we talk about Queen Elizabeth, she was ruling at that time and she never married. क्वीन एलिजाबेथ ने अपने लाइफ टाइम में कभी शादी नहीं किया, और इस वजह से उन्हें वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है बिकॉज शी नेवर मैरिड. A number of socio-economic changes happened at this time. First, this uses the period when English was stable in Middle Ages. If we talk about at this time what is there, अगर हम इस एज की बात करें तो इस एज में completely देखा जा सकता है कि इस एज में पॉलिटिकल इशूज़, रिलीजियस इशूज़ एवरीथिंग वाज स्टेबल्ड. हर कुछ स्टेबल हो चुका था, स्थिर हो चुका था. इफ़ वी कंपेयर विद आवर प्रीवियस एजेस, एज ऑफ रिवाइवल, तो एज ऑफ रिवाइवल एट द टाइम ऑफ एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ चॉशर, War of Roses was there between the House of Lancaster, Yorkshire, as well as 100 Years War. So different kind of thing was going on, historical event was going on, which was very harmful for British. But at this time, in this age, everything was stable, and that is why the people, the authors, they were able to focus for their works, for their development. Here in this period, books were getting printed, people started getting knowledge also.
सो हियर व्हाट हैपेंस, वी सी दैट इन द एज ऑफ रिवाइवल में हमारा प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है, और प्रिंटिंग प्रेस आ जाने की वजह से इस एज में बुक्स वर गेटिंग प्रिंटेड, बुक्स प्रिंटेड हो रहे थे और लोग पढ़ करके नॉलेज हासिल कर रहे थे. पीपल वर बीइंग द एजुकेटेड एट दिस time. At the same time, this was the period when a number of sailors went to distant land and discovered new land. For example, Columbus, वास्को डी गामा. तो ये एक ऐसा एज भी था जब वहाँ के सेलर्स दूसरे देश में जाते थे एंड दे यूज टू डिस्कवर द अदर कंट्रीज एंड दे स्टार्टेड रूलिंग. दैट मीन्स at this time British started colonizing the other country also, started making colony. So this is why this is all happening. Now we are going to talk, this was the high time when Britain started colonization other nations. So as I told you right now also that ये एक ऐसा एज था जहाँ पे ब्रिटिश खुद डेवलप तो कर ही रही थी और साथ ही साथ वो अपनी कॉलोनाइजेशन भी सेट करना शुरू कर चुकी थी इस एज में. इन शॉर्ट, ब्रिटिश वॉज डेवलपिंग इटसेल्फ. This was the period when Renaissance came into England. As we know, Renaissance it means rebirth, पुनर्जागरण. तो रेनासा फर्स्ट स्टार्टेड इन इटली. फर्स्ट इट स्टार्टेड इन इटली एंड देन आफ्टर इट जस्ट spread all over European countries. So this was the time, this was the high time when Renaissance also entered in England. Renaissance was a movement which first started in Italy and gradually spread all European countries. Renaissance stands for rebirth. As I told you that Renaissance stands for rebirth. Renaissance का मतलब ही rebirth होता है, पुनर्जागरण होता है. People started learning, people started giving the regions. If they are doing something, they know the region and then only they are doing. तो एक्चुअली क्या था ना कि इस एज के पहले जो लोग वहाँ के थे वे लोग ओनली दे वर डिपेंडेंट अपॉन द चर्चेज. जो चर्च पोप कह रहे हैं दे यूज टू बिलीव इट, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग दे डोंट केयर फॉर इट. बट इस एज में क्या था, लर्निंग वॉज द फर्स्ट, प्राइमरी वॉज द लर्निंग. एंड जब लर्निंग होती है किसी इंसान की तो वो शिक्षित होता है, वो समझ में आता है, वो समझता है दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो दिस इज़ हाउ एलिजाबेथन पीरियड got developed. And the most important thing, if we talk about Elizabethan period, was 1558 till 1603. तो Elizabeth started ruling England from 1558 until 1603. So this is all about Elizabethan age. Moving to the next point, the university wits. If we talk about the university wits was there. University wits was is a group of 7 writers, prominent writers of that time, and they were very serious for their writing. एक्चुअली अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी विट्स के पहले के जितने भी पोइट्स ऑथर जो भी रहते थे तो दे यूज टू राइट एज अ हॉबी. मीन्स दे हैड अ हॉबी टू राइट एंड दैट इज़ वाई दे यूज टू राइट. दैट वाज नॉट अ करियर फॉर देम. उन लोगों के लिए करियर नहीं था. हम बात कर लेते हैं चौसर की, तो चौसर के लिए राइटिंग कोई करियर नहीं थी. No doubt he used to write, but as well as he used to do so many works. बहुत सारे काम करता था, कॉटियर था, एमपी था, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो he was doing other works also to survive. Means राइटिंग वॉज नॉट प्राइमरी. बट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी विट्स की तो दे वर वेरी सीरियस इन राइटिंग एज वेल एज दे वर taking as a career to make, and as well as they were professional to write the things.
सो यूनिवर्सिटी वेट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी 7 लोगों की ग्रुप थी, जिसमें जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिले, थॉमस लोज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नेस. तो यहाँ पे इट इज़ मैंसन, आई हैव जस्ट मैंसन एरिया दैट जॉन लिली lifeline is there 1554 to 1606. Thomas Kidd 1557 to 1586. George Pillay 1558 to 1597. Thomas Lodge 1558 to 1625. Robert Greene 1560 to 1592. Christopher Marlowe 1560 1564 to 1593, and Thomas Ness last is 1567 to 1601. Okay, so what is this? These 7 people, out of these 7 people, 6 people were graduated from Oxford and Cambridge. इनमें से जो 7 हैं, 7 में से 6 जो हैं, इन्होंने 3 ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन पास किया, तो 3 कैम्ब्रिज से पास किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर गोइंग टू टॉक जॉन लिली फ्रॉम कैम्ब्रिज, जॉर्ज पिले कैम्ब्रिज, रॉबर्ट ग्रीन ऑक्सफोर्ड, थॉमस लॉज कैम्ब्रिज, थॉमस नेस ऑक्सफोर्ड, क्रिस्टोफर मार्लो ऑक्सफोर्ड, एंड 1 पर्सन इज हियर, ना ही उसने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया और ना ही उसने कैम्ब्रिज में ग्रेजुएट किया, but he himself had a great scholars and he used in writing, and that is also why he just came in this field in this university which counted. Thomas Kidd, it is none other than Thomas Kidd. Okay, so I have just given the picture also of them. You can understand that बिफोर शेक्सपियर के पहले यूनिवर्सिटी विट्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन राइटिंग को दिया, एंड दे वर जस्ट राइटिंग आउटस्टैंडिंग वर्क्स. द नेक्स्ट वी हैव, now we are just going to talk about the prominent writers and their major works of एलिजाबेथन एज. अब हम बात करने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर और उनके इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क्स. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ दिस एज इज नन अदर दैन एडमंड स्पेंसर. अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर की, तो इनकी लाइफ लाइन थी 1552 टू 1599. एज वेल एज इन्हें कहा जाता था द पोएट ऑफ पोएट्स, कवियों के कवि, एडमंड स्पेंसर, बिकॉज ही हैड अ ग्रेट स्किल ऑफ राइटिंग. His most popular poems is there, poetry is there, The Fairy Queens, which was written in 1590. Second is the Shepherd's Calendar. I would like to tell, मैं बताना चाहूँगा, the Shepherd's calendar was dedicated to his friend, and his friend was none other than Sir Philip Sidney, the most popular person at that time. Sir Philip Sidney. The Shepherd's Calendar is dedicated to Sir Philip Sidney, which was written in 1579. The next we have Nicholas Udall. Nicholas Udall, the work is there, Ralph Roister Doister in 1553, which is the first English comedy, जो कि पहला English comedy माना जाता है. The next writer we have Thomas Sackville. Thomas Sackville, lifeline is there 1536 to 1608, and his work is there Gorboduc. It was written in 1562 with Norton. ये वर्क को नॉर्टन के साथ लिखा गया था, और ये आपका द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी भी है. इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी, दैट इज गॉर्बोडक, रिटन बाय थॉमस सैकविल with Thomas Norton. The next we have Thomas Kidd. As I told you, he was a university wits also, and his lifeline is there 1557 to 1595. The most important work, The Spanish Tragedy, written in 1585. The next, Sir Philip Sidney, the Renaissance man of that
दैट टाइम। इन्हें रेनासा मैन भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज अ कॉटियर ऑल्सो, एक कॉटियर था। एंड वाइल फाइटिंग वेन ही वॉज कम्प्लीटली थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था, ही जस्ट टुक द drop of water to drink, but at the same time he found that his enemy soldier, they were too much thirsty, they were so thirsty, and उन्होंने अपना पानी उस सोल्जर्स को दे दिए, उस दुश्मन सोल्जर को दे दिए कि आप पी लो और आप जीवित रह जाओ, बट ही डिड नॉट टेक। इतनी मानवता था उनके अंदर कि उन्होंने अपनी पानी दे दिया, खुद मर गए, बट अपने दुश्मन सिपाही को जान बचाने के लिए अपनी पानी को भी दान कर दिया। तो ही वॉज द रेनासा मैन ऑफ दैट टाइम। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आर्केडिया in 1590 it was written, as well as to critic replied a critic he has written an apologize for poetry. The next prominent writer is Christopher Marlowe. Christopher Marlowe lifeline is there 1564 to 1593. The most important work, actually Christopher Marlowe is known for writing only tragedy. Christopher Marlowe को जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेजिडी लिखने के लिए, and his most important work is Dr. Faustus, which was written in which was published posthumously. पोस्ट्यूमसली मिस होता है मरने के बाद, मरने के उपरांत, ओके, मरने के बाद जो वर्क पब्लिश्ड होती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड। तो डॉक्टर फॉस्टर वाज पब्लिश इन 1604, द जियो ऑफ माल्टा 1589, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर जिस राइटर्स के नाम से एज जानी जाती है, शेक्सपियरियन एज, अगर हम इनकी बात करें तो हिज लाइफ लाइन इज देयर 1564 to 1616. In his lifetime he has written a number of works in which he has written 37 plays, 154 sonnets and 2 poems. एक्चुअली एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो एट दैट टाइम ड्रामा वॉज सो पॉपुलर, ड्रामा बहुत ही पॉपुलर थे। नॉवेल्स वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, उस समय नॉवेल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सो द पीपल यूज टू राइट प्लेज, ड्रामा। द नेक्स्ट वी हैव Francis Bacon. Francis Bacon is a pamphleteer. He used to write pamphlets, essays. His lifeline is 1561 to 1626. He has written an essay in 3 editions, and New Atlantis. In this work is incomplete. It is not completed. New Atlantis. The next we have John Lilly. Lifeline is 1554 to 1606. And his most important work is the Euphus in 1579 it was written, Sappho and Phao it was written in 1584. The next is Robert Greene 1558 to 1592. His most important work Friar Bacon and Friar Bungay. So what is there? Robert Greene is the first person to criticize विलियम शेक्सपियर। रॉबर्ट ग्रीन पहला इंसान था जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, कहते हुए एन अपस्टार्ट क्रॉ, ओके। एंड द नेक्स्ट वी हैव थॉमस नेसे लाइफलाइन इज देयर 1567 to 1601, and the most important work is there The Unfortunate Traveler 1594 it was published there. Thanks for watching. If you like the presentation, please like, share and subscribe. And if you have any suggestion, if you want some other videos, then please put your comment in the comment section so that I may work over that, and soon we will meet in our next video. Till that, stay tuned with Jai Gurudev English Literature. Thank you.